ओके, सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देख रहे थे. पहला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय accelerated or oscillating charge. These do not require any material medium for propagation. Third, the speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second, given by the relation c is equal to 1 by root under mu naught epsilon naught. In electromagnetic waves, the sinusoidal variation in both electric and magnetic field vectors occur. So you will see that both electric field and magnetic field varies sinusoidally. तो अगर हम लोग ये 3 डायमेंशनल पूरा कंसिडर करें, राइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स वाई प्लेन में जा रहा है तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वाई जेड प्लेन में ऐसे ट्रेवल करता है. तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, और जो प्रोपगेशन है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर, मतलब इनका जो ऑसिलेशंस है उनके परपेंडिकुलर होता है ये मूवमेंट इसका. ठीक है. So in electromagnetic waves, the sinusoidal variation in both electric and magnetic field vectors occur simultaneously. As a result, they attain the maximum and minimum values at the same place and at the same time. The amplitude of the electric and magnetic fields in free space are related by E naught by B naught is equal to C. Now, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू, उनका जो रिलेशन है, उनका जो रेशियो है वो C के बराबर होगा. सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द ऑसिलेशन E एंड B आर इन द सेम फेज. फेज सेम होता, कोई फेज डिफरेंस नहीं है. मतलब ये 0 पे है तो 0, यहाँ पे भी 0 है तो 0. मतलब ये हमने जो इस तरह का वेव किया और इसमें जो हम लोगों ने देखा, तो देखो फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, राइट. सो यू विल फाइंड दैट इसका जो एक कंप्लीट साइकिल जितने टाइम में होगा उतने ही टाइम में इसका भी साइकिल कंप्लीट होता है. दूसरा, ये जब 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है. ये जब मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है. तो फेज डिफरेंस बेसिकली 0 होता है, राइट. Cross product of E and B, E cross B always tells the direction in which the wave is traveling. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये. E क्रॉस B, तुम जो E है हमारा वर्टिकल प्लेन में, B जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, E क्रॉस B करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन है, करके देखोगे E क्रॉस B, तो थंब का डायरेक्शन तुम्हें प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव जिधर ट्रैवल कर रहा है उसका डायरेक्शन देता है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So cross product E cross B always tells the direction in which the wave travels. The direction of variation of electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave. So ये जो direction of variation of electric और magnetic field है, हम लोगों ने देखा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वेरी कर रहा है, राइट. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर वेरी कर रहा है ना. तो इनका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है, these are perpendicular to each other and perpendicular to the direction in which it is moving. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और वेव का प्रोपगेशन इधर. इधर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. Therefore, electromagnetic waves are transverse in nature like light waves. ट्रांसवर्स वेव है. ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट और जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है. मतलब अगर इसका वाइब्रेशंस इधर है और इसका जो मूवमेंट है वो इधर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. The velocity of electromagnetic waves depend entirely on electric and magnetic properties. ठीक है. जो हमारा electromagnetic waves का जो velocity है, that depends entirely on electric and magnetic properties of the medium in which these waves travel and is independent of the amplitude of the field vectors. ठीक है. तो जो हमारा electromagnetic wave का जो velocity है, it depends entirely on electric and magnetic properties of the medium in which these waves travel
and is independent of the amplitude of the field vectors. The velocity of electromagnetic waves in dielectric is less than c. तो ये जो velocity है electromagnetic wave का in the dielectric it is less than c. Okay. मतलब अगर ये फ्री मीडियम में होगा तब वो c के बराबर में होगा और डाइलेक्ट्रिक में अगर कोई दूसरे मीडियम में होगा तो c से लेस होगा. The electromagnetic waves carry energy which is divided equally between electric and magnetic field vectors. तो जो electromagnetic wave जितना energy carry करता है that is divided equally between electric and magnetic field vectors. तो electric field जितना energy carry करेगा उसके बराबर magnetic field energy carry करेगा. The electric vector is responsible for the optical effects of electromagnetic waves and is called the light vector. तो जो optical effect, जो visibility है optical effect, that is because of the electric vector. So it is responsible for the optical effects of electromagnetic waves and that's why electric vector को हम लोग light vector भी कहते हैं. The electromagnetic waves being uncharged are not deflected by electric and magnetic fields. तो ये जो electromagnetic waves जब uncharged होगा, they are being uncharged, they are not charged and that's why are not deflected by electric and magnetic fields. तो लाइट वेव्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कराएंगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, या मैग्नेटिक फील्ड में पास कराएंगे तो भी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता. Intensity of electromagnetic waves. Intensity of electromagnetic waves at a point is defined as the energy crossing per second per unit area normal, ठीक है, around that point during the propagation of electromagnetic wave. ठीक है. So, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट ये देखो एक सेकेंड. सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मान लो हमारे पास ये एक एरिया है, right? So intensity of electromagnetic waves at a point defined as the energy at a point is defined as energy crossing per unit area. तो इसके थ्रू जितना एनर्जी पास कर रहा है, let's say delta u is the amount of energy which is passing through it per unit area and around the point during the propagation of electromagnetic waves crossing per second per unit area. So delta u मान लो इसका एरिया a है और delta u is the amount of total energy which is passing through it in delta time. So that means delta u by a delta t हमें basically इसका intensity दे देगा. तो basically energy by area into time. Intensity is equal to energy divided by area into time. तो area a हो गया, time delta t हो गया और energy delta u हो गया. Is it clear? Yes, sir. Now Hertz experiment, ये भी मतलब ऐसे important नहीं है, that is this has also been removed only. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से. So electromagnetic spectrum, the orderly distribution of electromagnetic radiations according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. तो एक जो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके वेवलेंथ के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो अगर हम लोग वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में या फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ओके, so this is known as electromagnetic spectrum.
So first of all, first is radio waves. Radio waves का wavelength range is greater than 0.1 millimeter. Okay, और frequency range is 5 into 10 to the power 5 to 3 into 10 to the power 9 hertz. प्रोडक्शन कैसे होता है इसका? ऑसिलेटिंग सर्किट और रैपिड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स. डिटेक्शन रिसीवर एरियल्स, बेसिकली जो एरियल्स लगे होते हैं उसमें रिसीवर जो लगे होते हैं उससे डिटेक्ट होता है. तो ये रेडियो वेव्स हो गया. अब दूसरा है माइक्रोवेव. माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ रेंज है 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर तक इसका वेवलेंथ रेंज होगी. और इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 टू 3 इंटू 10 टू द पावर 11. ये हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा. ये ना 0.1 mm कर लो, मीटर नहीं होगा, mm होगा यहाँ. So 0.1 mm to 1 mm, 3 into 10 to the power 9 to 3 into 10 to the power 11 हो गया. और प्रोडक्शन इज थ्रू क्लिस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व. इस प्रोडक्शन इनसे होता है. डिटेक्शन इज पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स. So this is how you detect a microwave. Now माइक्रोवेव के बाद थर्ड नंबर पे है इंफ्रारेड. ठीक है, इंफ्रारेड का अगर हम लोग वेवलेंथ रेंज देखते हैं, दिस इज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 700 मिलीमीटर. और इसका फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 11 से लेके 4 इंटू 10 टू द पावर 14 तक होगा. और वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इससे प्रोड्यूस होता है. डिटेक्शन इसका थर्मोपाइल, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म्स. तो ये सब जो है डिफरेंट तरीका है इसको डिटेक्ट करने का. उसके बाद आता है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक है. So 1 mm to 700 mm greater than 0.1 मीटर. नहीं, ये सही था. एक मिनट, यहाँ गलत दिया हुआ. ये 0.1 मीटर होगा और ये 0.1 मीटर तो ओके. अब हम लोग अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट पे हैं. तो विजिबल लाइट का जो रेंज है वेवलेंथ का 700 nm टू 400 नैनोमीटर है. और यहाँ पे 1 mm टू 700 nm गलती है. सो 700 nm टू 400 nm है. 4 इंटू 10 टू द पावर 14 से लेके 8 इंटू 10 टू द पावर 14 तक इसका रेंज है फ्रीक्वेंसी का. एक्साइटेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स. तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, उसके एक्साइटेशन से ये प्रोड्यूस होता है विजिबल लाइट. ह्यूमन आईज इसको डिटेक्ट कौन कौन कर सकता है? ह्यूमन आई, फोटो सेल्स एंड फोटोग्राफिक प्लेट. उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. तो अल्ट्रा वायलेट जो स्पेक्ट्रम है ये 400 nm टू 1 nm तक है इसका वैल्यू. एंड 8 इंटू 10 टू द पावर 14 से लेके 3 इंटू 10 टू द पावर 17 तक इसका फ्रीक्वेंसी है. एक्साइटेशन ऑफ एटम, स्पार्क एंड आर्क लैम्प्स, ये हमारा प्रोडक्शन इसके थ्रू होता है. और डिटेक्शन इज थ्रू फोटो सेल्स एंड फोटोग्राफिक फिल्म्स. नेक्स्ट इज इन द स्पेक्ट्रम इज एक्सरेज 1 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर.
और frequency is 3 into 10 to the power 17 to 3 into 10 to the power 20. X-ray tubes से production होता है और excitation of inner cell electrons, and detection is through photographic film and Geiger tubes. गामा रेज जो नेक्स्ट वाला है स्पेक्ट्रम में, इसका जो वेवलेंथ है दैट इज लेस देन 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर. फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 18 से लेके 5 इंटू 10 टू द पावर 23 तक है. 20 ही रखो इसको क्योंकि यहाँ पे 20 तक है. न्यूक्लियर ओरिजिन, इसका ओरिजिन न्यूक्लियस से होता है, और फोटोग्राफिक फिल्म और आयोनाइजेशन चैम्बर. तो these are the two ways in which we detect this. Now main part of electromagnetic spectrums and their uses. तो जो मेन ये वाले जो हैं इन सब का जो डिटेल में अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, उनके स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उसका यूजेस. तो मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर यूजेस. पहला है हमारा रेडियो वेव्स. So radio waves. Now these are electromagnetic. So these are electromagnetic waves of frequency range from 5 into 10 to the power 5 to 3 into 10 to the power 9 hertz. So these waves are produced by oscillating electric circuits having an inductor and capacitor. Uses: the various frequency ranges are used for different types of wireless communication systems as mentioned below. The electromagnetic waves of frequency range from 530 kilohertz to 1710 kilohertz AM band इसको कहते हैं. It is used in ground wave propagation. दूसरा है electromagnetic waves of range frequency range 1710 kilohertz to 54 megahertz are used for shortwave AM band. It is used in sky wave propagation. तो ये हो गया हमारा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ये हमारा हो गया स्काई वेव प्रोपगेशन. फ्रीक्वेंसी रेंज याद करना है और किसके लिए यूज होता है ये याद करना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 54 megahertz to 890 megahertz are used in television waves. So ground wave propagation, sky wave propagation, और फिर ये टेलीविजन वेव्स में यूज होता है. तो टेलीविजन वेव्स, शॉर्ट वेव एएम बैंड, और उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, ये भी एएम बैंड के लिए है. The electromagnetic waves of frequency range 88 megahertz to 108 megahertz form modulated frequency modulated radio band, that is FM. It is used for commercial FM radio. Now fifth one is the electromagnetic waves of frequency range 300 megahertz to 3000 megahertz form ultra high frequency UHF band. It is used in cellular phones communication. Now microwaves. सेकेंड स्पेक्ट्रम में जो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ना है. तो पहला रेडियो वेव्स था, सेकेंड है माइक्रोवेव्स. ना microwaves are the electromagnetic waves of frequency range 3 into 10 to the power 9 to 3 into 10 to the power 11 hertz. तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 into 10 to the power 9 से लेके 3 into 10 to the power 11 hertz तक का है. They are produced by special vacuum tubes, namely klystrons, magnetrons, and gun diodes.
नाउ यूजेस पे आते हैं इनके माइक्रोवेव्स के. एक यूज तो हम लोग को पता ही है, घर में रोज यूज करते हैं हम लोग, राइट? सो माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार system for aircraft navigation. A radar using microwave can help in detecting the speed of tennis ball, cricket ball, and एंड ऑटोमोबाइल वाइल इन मोशन. तो जो क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, ये सब का जो स्पीड हम लोग मेजर करते हैं, बॉलिंग स्पीड और ये सारी चीजें हैं माइक्रोवेव को यूज करके हम लोग करते हैं. माइक्रोवेव ovens are used for cooking purposes, and fourth one is microwaves are used for observing the movement of trains on rails while sitting in micro while sitting in microwave operated control rooms. Infrared waves, third in this series. So infrared waves were discovered by Herschel. These are electromagnetic waves of frequency range 3 into 10 to the power 11 to 4 into 10 to the power 14 hertz. Infrared waves sometimes are called as beat waves because their absorption causes the heating effect, called as heat waves or beat waves. Okay. Infrared waves sometimes are called as heat waves because their absorption causes the heating effect in the bodies and surroundings. Infrared waves are produced by hot bodies and molecules. These waves are not detected by human eye, but snakes can detect them. Uses: infrared waves are used in physical therapy, that is, to treat muscular strain, to provide electrical energy to satellite by using solar cells, for producing dehydrate fruits. So, for producing dehydrated fruits. For taking photographs during the conditions of fog, smog, etc. In greenhouses to keep the plants warm and in maintaining Earth's warmth through the greenhouse effect. Sixth one is in revealing the secret writings on the ancient walls. In solar water heaters and cookers, in weather forecasting through infrared photography, in checking the purity of chemicals. So, on checking the purity of chemicals and in the study of molecular structure by making infrared absorption spectrum. Visible light, it is the narrow region of electromagnetic spectrum which is detected by the human eye. Its frequency is ranging from 4 into 10 to the power 14 to 8 into 10 to the power 14 hertz. It is produced due to atomic excitation. The visible light emitted or reflected from objects around us provides the information about the world surrounding us. Uses: visible light is used to see the beautiful world around us as it excites our sense of vision. In photography, to take the picture of objects. In astronomy, to track the movement of heavenly bodies. In optical microscopy, which involves the study of minute objects. Fifth one is the spectrum is ultraviolet rays. The ultraviolet rays were discovered by Ritter in 1801. The frequency range of ultraviolet rays is 8 into 10 to the power 14 to 3 into 10 to the power 17 hertz.
The ultraviolet rays are produced by sun, special lamps, and very hot bodies. Most of the ultraviolet rays coming from sun are absorbed by the ozone layer in the Earth's atmosphere. The ultraviolet rays in large quantity produce harmful effect on human eyes. Uses of ultraviolet rays are: first is for checking the mineral samples. So, for checking the mineral samples through the property of ultraviolet rays causes fluorescence. In the study of molecular structure and arrangement of electrons in the external cell through ultraviolet absorption spectra, to destroy this bacteria and for sterilizing the surgical instrument. तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं यूवी रेज से. तो अभी यूवी रेज के जो हम लोग सैनिटाइज करते हैं अपने हैंड्स वगैरह को, तो यूवी रेज से भी सैनिटाइज हो सकते हैं. तो आजकल वो सारे ऑफिसेस वगैरह में वो एक यूवी रेज एक लगा यूवी रे वाला मशीन लगा होता है, उसके नीचे अपना हाथ ले जाओगे तो अपने आप हाथ सैनिटाइज हो जाएगा. तो सेम चीज इनफैक्ट मॉल्स वगैरह में भी दे आर पुटिंग इन कि आप वो यूवी रे वाले सैनिटाइजर के थ्रू गो मतलब पास करोगे तभी आपको मॉल में जाने मिलेगा. So, for checking the mineral samples through the property of ultraviolet rays causing microscope, in the study of molecular structure and arrangement of electrons in the external shell through ultraviolet absorption spectra. Third is to destroy the bacteria and for sterilizing the surgical instrument. In burglar alarm, right, to preserve the foodstuff, in LASIK eye surgery, and to kill germs in water purifier. इन सब में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है. Sixth one is X-rays. The X-ray were discovered by German physicist W. Roentgen. Their frequency range is 3 into 10 to the power 70 into 3 into 10 to the power 20. Hertz. These are produced when high energy electrons. So these are produced when high energy electrons are stopped suddenly on a metal of high atomic number. X-rays have high penetrating power. Uses of X-rays are: first, X-rays are used in first is in surgery for the detection of fractures, foreign bodies like bullets, diseased organs and stones in the human body. Second is in engineering for detecting faults, cracks, flaws and holes in final metal products. Third, for the testings of for the testing of weldings, castings and molds. तीसरा in radiotherapy to cure untraceable skin diseases and malignant growths. Fourth is in detective departments for detection of explosive opium, gold and silver in the body of smugglers. In industry for detection of pearls in oysters and defects in rubber tires, gold and tennis balls, etc. For testing the uniformity of insulating materials. फिफ्थ वाला जो सिक्स्थ वाला है, in scientific research for the investigation of structures of crystal, arrangement of atoms and molecules in the complex substances. तो ये सब हम लोग को एक्सरे के यूजेस में आ गए. अब हम लोग गामा रेस कर रहे हैं, राइट? तो गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स of frequency range 3 into 10 to the power 5, 3 into 10 to the power 20 to 5 into 10 to the power 23. Gamma rays have a nuclear origin. These rays are highly energetic and are produced by the nucleus of the
by the nucleus of radioactive substances. Uses of gamma rays. So gamma rays are used first in treatment of cancer and tumors. Second, to preserve the foodstuff for a long time, as the soft gamma rays can kill microorganisms easily. So to preserve food stuff for long time, as soft gamma rays can kill microorganisms easily, to produce nuclear reactions, and to provide valuable information about the structure of atomic nucleus. Now, microwave oven, it is a device used in kitchen for heating or cooking the food. The basic principle of working of microwave oven is to create microwave radiation of suitable frequency in the working space of oven where the food to be cooked can be kept. This radiation may match the resonant frequency of rotation of water molecules, which is about 3 gigahertz. In this situation, energy from a wave is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules. The microwave of this frequency is of energy equivalent to heating up water. So when microwave of this frequency fall on food item containing water like fruit, vegetable, meat, cereals, etc., placed in oven, the water molecules absorb these radiation. Their energy increases. These molecules share their energy with neighboring food molecules. Due to it, the entire food gets heated. Now, in a microwave oven, one should use porcelain vessel and not metal container for cooking the food items. It is required to avoid the danger of getting an electric shock from accumulated electric charge and to avoid the melting of metals from heating. A microwave oven, the porcelain container containing food for cooking remains unaffected and cool, whereas only the food inside gets heated. It is so because the large molecules of porcelain container vibrate and rotate with much smaller frequency than that of microwave and thus cannot absorb microwaves. तो बेसिकली कंटेनर ज़्यादा हीटअप नहीं होता, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। वो इसीलिए कि पोर्सिलेन से बना जो कंटेनर है उसका ना द लार्ज मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू जिन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, तो एज कंपेयर टू दोज मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर में थ्योरी इतना है। सर जो कीमोथेरेपीज एंड ऑल होता है तो उसमें लाइक गामा वेव्स यूज करते हैं हम या फिर एक्सरेज? नहीं, ये जो कीमोथेरेपी होता है ना, उसमें रेडियोथेरेपी बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का रेडिएशन होता है बेसिकली। तो जब जो हमारा कैंसरस ट्यूमर वाला जो सेल है उसको किल करना होता है, बेसिकली उसको बर्न करना होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले तो वो जो रीजन है वो आइडेंटिफाई करते हैं, और पहले जो इनिशियल लेवल पे रेडियोथेरेपी बस देते हैं, मतलब रेडिएशन जो गामा रेज है उसको हम लोग पास करते हैं, है ना, बॉडी के उस पार्ट से, बाकी पूरे पार्ट को कवर कर देते हैं और उसी पार्ट पे बस हम लोग रेडिएशन डालते हैं। उससे वो सेल जो है वो पूरा आसपास का भी सेल पूरा किल हो जाता है। कीमोथेरेपी थोड़ा डिफरेंट है। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, पहले हम लोग कोई केमिकल इंजेक्ट करते हैं,
उसके बॉडी में, और केमिकल इंजेक्ट करने के बाद उसके बाद रेडिएशन पास करते हैं। तो जहां जहां केमिकल जाएगा वहां वहां वो रेडिएशन उसके साथ जाएगा। तो बेसिकली वो क्या है कि वो और ज्यादा मतलब इफेक्टिव है कीमोथेरेपी। तो रेडिएशन ही होता है, रेडिएशन देते हैं, बट रेडिएशन केमिकल डालने के बाद रेडिएशन देते हैं, वो कीमोथेरेपी हुआ। और एक रेडियोथेरेपी होता है जिसमें बस हम लोग रेडिएशन पास करते हैं, वहां पे केमिकल नहीं डालते। ठीक है। ओके सर। तो आई थिंक कि देखो जो न्यूमेरिकल्स वगैरह और डिस्प्लेसमेंट करंट वाले वगैरह पे ही न्यूमेरिकल है, तो वो सब डिस्प्लेसमेंट करंट तो अब हट ही गया है सिलेबस, तो वो आएगा नहीं अब। जो थोड़ा बहुत वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी डेंसिटी पे है, वो हम लोग एक आध क्वेश्चंस वगैरह कुछ कुछ कर सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो वो हम लोग अगली क्लास में 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। यस सर। तो शुरू वाले रे ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो सब तो हम लोग थोड़ा 10th क्लास में भी पढ़े हैं। तो बट बाद में जहाँ से ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला और जो स्फेरिकल शेप में जब वो बॉडी रहता है, तब वहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है वो सब जब पढ़ेंगे तब इंटरेस्टिंग आएगा, तब फिर मजा आएगा पढ़ने में। ऑप्टिक्स भी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी मार्क्स का वेटेज है उस पर, तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो गुड, वील स्टॉप हियर फॉर